वेलकम बैक गाइस। चलो आज शुरू करते हैं किचन आइलैंड हमारा। अब तक हमने ये बना दिया था एक कैबिनेट जो कि पीछे आ रहा है। अब उसके आगे वाला कैबिनेट किचन आइलैंड ये बनाते हैं हम। आज स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं अभी। ग्रुप बना दे रहा हूँ मैं। इसको निकालेंगे। ये किचन आइलैंड का एक लेआउट है। ये 600 मीटर बाई 600 mm ऐसा है। Six inches by 2 feet. पहले ले लेते हैं 24 2 feet, then 96 inches.
इसका ऑफसेट ले लेते हैं हम 0.15 का। इसका कलर इमेज में सेम ही है जो पीछे वाला है वैसे ही। तो पिछले कलर को हम देखने के लिए इन मॉडल में रहेगा हमारा ये कलर से हमारे। टू 200 mm का गैप है हमारे किचन आइलैंड से पीछे वाले कैबिनेट को, तो वो हम बना लेते हैं 48 इंचेस। ये वॉकिंग का पाथ रहेगा इस किचन आइलैंड को।
से देखना है। कलर ये लेकर यहाँ पर रखें। इसमें थोड़ा सा गैप है, जैसे कि इसमें मिडिल से, तो आप मिडिल से यहाँ से लीजिए, एक पॉइंट का यहाँ पर ब्लू लाइन होता है, ब्लू डॉट यहाँ पर इस तरह उसका मिडिल पॉइंट ये होता है। और इसको भी आपको सेलेक्ट करके मूव करना है मिड पॉइंट से मिड पॉइंट। ये आ गया आपका मिड पॉइंट काउंटर। गाइड डिलीट कर देते हैं। इसके बाद बचा अप्लाइन यूनिट। तो अप्लायंस यूनिट हमारी और एक और वीडियो में बनेगा। नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट के लिए देखिए आप, स्टे ट्यून फॉर थर्ड पार्ट। एंड अगर वीडियो समझ में आ रही है, आपको सब कुछ पसंद आ रहा है, तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमने अभी स्टार्टअप किया है, अभी ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम लोग वीडियोस बना रहे हैं। इंशाल्लाह आगे और अच्छे वीडियोस बनाएंगे। अभी ये नेक्स्ट पार्ट आप देखिए, इसके बाद में थर्ड पार्ट में आपको अप्लायंस यूनिट बनाकर उसके बाद में इसके अंदर हॉब और बाकी सिंक वगैरह लगाना है और हैंडल्स लगाना है, उस वीडियो में देखें।